बहुत बहुत धन्यवाद एंड ये बहुत मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के बीच में आज उपस्थित हूं। मैं एक छोटे से गांव बरपार से आता हूं और बरपार से बेंगलोर की दूरी तय करने में एक सूत्र है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप का सूत्र। द थिंग विच कनेक्ट्स माय विलेज बरपार टू दिस ऑगस्ट हॉल is the idea of entrepreneurship. And in the next 10 odd minutes, I hope to walk you through three things. First, कैसे हम लोग अपने context को change करें, वहां जाएं जहां future of work will define the future of विकसित भारत. दूसरा, what are we doing in my constituency, which is a remote Lok Sabha on the eastern edge of Uttar Pradesh. And finally, I hope to invite some of you to this effort that we are making in that constituency, and I'm sure that some of you will rise to that challenge. I've called it Amrit Prayas, and the first piece is, where are we located? I'm located somewhere between Patna and Lucknow, and if you count up the population of these two states, you're talking about 370 million people. That's slightly above the United States of America. That's about 1/4 of India's population. So we are in the heartland of what I would say Indian humanities. And you could argue also in the heartland of politics. But why is this area so backward? ये कितना पिछड़ा क्यों है? इसलिए है क्योंकि यहीं पर क्रांतिकारी एक्टिविटी हुई थी। मेरे जिले के बगल में बलिया में मंगल पांडे ने पहली गोली 29 मार्च 1857 को चलाई थी और उसके बाद 90 साल तक इस क्षेत्र को दबाया गया, ऑलमोस्ट लॉकडाउन कर दिया गया। लखनऊ में कंटोनमेंट क्यों है? वहां तो कोई नेपाल नहीं, वहां तो कोई बर्मा नहीं, वहां तो कोई पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान नहीं। इट्स ओनली बिकॉज फॉर 90 years after that 1857 war of independence, and for those you know, Rani Lakshmibai was of course from Jhansi, but she was born in Purvanchal, my area. So this Krantikari Kshetra, and the dark irony of India is those very regions which rebelled against the British are today poor. You go to Jharkhand, Birsa Munda, it's poor. You go to Santhal regions of Bengal, it's poor. So we need to do something as a corrective action to make sure that we don't ignore the heartland of India. And this district, which has a population of about 3 million, 30 lakh, it's a Lok Sabha which also takes care of two districts. One is Devariya, one is Kushinagar, where Buddha passed away. And the reason this region was targeted is because the heartbeat of India also, in my view, resides there. Buddha Bhagwan passed away in Kushinagar. Two of my Vidhan Sabhas are in Kushinagar. You talk about Kabir, he roamed through that area. Talk about Ramchandraji, Ayodhya is not far away. You talk about Valmiki, he's from my constituency, he's adjoining. Talk about Aryabhat, who about 300 years before Kepler talked about the earth rotating on its axis, Magad प्रांत के थे। ये हमारी हार्टलैंड था। जब अंग्रेजों ने समझा कि इस हार्टलैंड से ही विद्रोह की भावना आएगी तो उसको तबाह करने के लिए बहुत काम किया। And then this is symptomatic of 240 such districts across the country, what I call middle of diamond India. And for that reason, I'm carrying my book. It's a book published by Penguin called Middle of Diamond India, National Renaissance Through Participation and Enterprise. And it busts the theory that C.K. Prahlad said, which is bottom of the pyramid. Bottom of the pyramid got disappeared about 20 years back. There are more people in tier 2 and tier 3 districts than there are at the bottom. There are 400 million poor, there are 200 million rich, but of the 1.4 billion, there are approximately 800 million, which is about 10% of global humanity, who are neither rich nor are they poor. ये अब आज की तारीख में ऐसा नहीं कि अपने पैर पे नहीं खड़े हो सकते हैं। एंड दैट इज वाई, जो मैंने अपनी किताब में कहा, मैं यहां कहना चाहता हूं, इस भारत को उठाने के लिए सरकार को एक इनेबलिंग रोल प्ले करना पड़ेगा। जो मैंने अपने वक्तव्य में कहा, उसको जामबंद बनना पड़ेगा। कहां रीछपत सुन हनुमाना, का चुप साध रही बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। Jamban tells Hanuman, you have everything in you, you just have to rise up. That's the process that we are thinking about of enablement. How do we enable? The good news is that before I got elected to my parliament, I'd already done some homework. So I had created a national movement called Jagriti Yatra. Some of you are here from Yatra itself. We have been doing this for the last 18 years. हम लोग 525 लोगों को एक ट्रेन में पूरे देश का भ्रमण कराते हैं और उन उद्यमियों से मिलाते हैं जो भारत को बना रहे हैं। हम अरविंद आई केयर जाते हैं, हम यहाँ पर ISC जाते हैं, हम श्रीहरिकोटा जाते हैं, हम बहरामपुर जाते हैं,
हम देवरिया जाते हैं, हम नालंदा जाते हैं. देवरिया एकमात्र जगह है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अंडर द शेड ऑफ अ banyan tree, a photograph of which I'll show you. We create a very, very important assembly in my own district. Then we go to Delhi, then Pilonia, then Sabarmati, back to Mumbai. It's the largest train journey of its kind in the world. It's been going for 18 years, and we have created about 9,500 to 10,000 leaders. Some of them are in this room who have taken this journey of entrepreneurship. But what we also did, कि हमारे 10 जिले हैं मेरे देवरिया के आसपास, गोरक्ष प्रांत में, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, इसमें भी हम लोगों ने नेटवर्क ऑफिसेस खोले हैं. और जो आपको राइट हैंड साइड में देख रहा है, ये मेरे गांव में है. मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, बरपार. उसी में एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है, बड़ के पार, और उसी के साथ मिलकर हमने 10 जिलों में करीब 4-5 साल से हम काम कर रहे हैं. इसकी पॉपुलेशन 36 million, which is half the population of Karnataka. That's the size of UP, 240 million. So that's why we have taken this attempt to say, how do we create this kind of revolutionary work here? That's the context. Now let me tell you what we are trying to do. In my constituency, if we don't do anything, it has been growing for 5.7% GDP. It has approximately a $2 billion GDP right now. If you ask many parliamentarians as to what the GDP is, you'll probably find a blank face. But I think the 5.7% growth is not enough for Viksit Bharat. I got elected not on a platform of caste, not on a platform of dharma. I went to the voters to say, I will make Viksit Bharat come alive in my district. If the Prime Minister is doing it across the country, if the Honorable Chief Minister is doing it across Uttar Pradesh, it's my duty to make sure that I make it happen in my district. And that's exactly what we are doing. अगर हम आज देखें, FY24 जब हमने इस प्लान को बनाया था, मेरे इलेक्शन के करीब 6 महीने बाद, तो हम लोग करीब 2 बिलियन थे. कुछ ना करें तो 3.5 बिलियन पहुंच जाएंगे. लेकिन अगर हमें 4.8 बिलियन जाना है, तो हमें करीब 1.5 बिलियन की बढ़त चाहिए. But more important, and more important for this audience, is the work. Outside of agriculture, we plan to create 1.7 lakh jobs, which are not necessarily jobs which are just in agriculture. I'm leaving agriculture to the side for a minute. Also, we need to make it environmentally sustainable. I have a center of excellence on bioregionalism here, which is looking at how do we make sure that our footprint is not there. देवरिया में और बरपार में environmental problem ये नहीं कि बहुत प्रदूषण हो रहा है, उसको घटाना है. वहां तो वैसे भी per capita emission बहुत कम है. तो उसको उसी तरह से हम लोग लेके कार्बन माउंटेन को क्राइम ना करें और फिर नीचे ना जाएं. We should have to drill through the carbon mountain. And the last thing is relevant for today's audience, human potential. मैं वहां अगर सांसद हूं, नाली, बिजली, सड़क, ट्रांसफार्मर जला हुआ है, थाने में कोई बंद हुआ है, इसके लिए हर दिन सुबह मेरे से लोग मिलने के आते हैं और मैं 1 घंटा बैठता ही हूं, अनिवार्य है, बैठता हूं. लेकिन यदि इतने पे ही सीमित रहूंगा तो जो ह्यूमन पोटेंशियल मेरे क्षेत्र में है, जो 30 लाख लोगों की ह्यूमन पोटेंशियल है, उसको मैं अगर जगा दूं तो कितना फायदा होगा. And I was listening to the conversation on AI, and I believe that we need to look at AI in a very different sense. How do we release human potential? We shouldn't go the way that Western capitalism has taken, which is the North Star there is, मैं कैसे इसको automate करूं ताकि लोग गायब हो जाएं, मैं इस efficiency बढ़ाऊं. हमारे यहाँ we need to have a more meaningful, and I have created a thesis on that called Humanist AI. And if you want to know more about it, we are creating an institute in Mumbai called Middle of Diamond Institute, which will do more research on that. How do we do that? We have 6 pillars. The first 3 pillars are what I call essentially reform. Not much to do. Agriculture में 10% है. वो जो 1.5 billion GDP का extra. हमने MSME में, जिसमें मेरा बहुत बड़ा हुनर है, 18 साल से यही कर रहा हूं. How do we promote entrepreneurship in small towns and districts? Malti Yadav, who has got 100 women who are working for her because she's making achar. There's a lady who's doing terracotta. मूंछ पे बहुत काम हो रहा है. Third is getting in low skill manufacturing. अभी बहुत बड़ी skilling नहीं हो पाएगी. I'll come to that. Which is how do we make sure non-leather shoe manufacturing, apparel and other things. Fourth is slightly outside, which is how do we get big hospital chains, tourism. Buddha Bhagwan passed away there. If any other country in the world had the Buddha passing away in a district, they would have created a $2 billion industry. हमारे यहाँ उल्लू बोल रहे हैं वहाँ पर. So how do we make sure that we get that going? It's very critical that we have this kind of effort over a period of 10 years. ये 1-2 साल का नहीं होगा. I'll have to get re-elected another time to get this whole program on the way, which is also the reason that the first 3 pillars are the most important, because from my political perspective, that's where the votes are. Then you go to the right-hand side of this and you talk about export of manpower, IT, GCC. I know there was a talk about GCC going to tier 2 districts. I believe that over the next 10 years we can get some of them to tier 3 districts. And finally, जो मेरा एक
प्री सब्जेक्ट है क्योंकि मैं एरोस्पेस डिफेंस और स्पेस का लीडर था, मैंने इसमें काफी काम किया है, इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पर हूँ भी बैंगलोर में। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करें, वो 5-10% रहेगा, लेकिन अगले 10 साल में अगर हम लोग शिफ्ट नहीं करें एग्रीकल्चर से तो हम सब एग्रीकल्चर में ही फंसे रहेंगे। एंड देयरफॉर I think we need to do a lot more. There are 4 enablers. Expand air railways. We are looking at a township, urbanization, digital first, and some anchor capabilities. And of course, there are ancillary industries. I won't bore you too much with this. What is important, though, is to say that this requires serious investment also. We believe that over the next 10 years, it's $2 billion, which is a rounding error for this country now. And for a nation, or my constituency, which is the size of Qatar, it's bigger than Qatar. This is not something that we can do. I think मेरे हिसाब से आज की तारीख में अगर आपके पास एक वैल्यू प्रोपोजिशन है तो पैसा आएगा, उसमें कुछ हम लोग को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए चाहिए, कुछ लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है उसको सपोर्ट करने के लिए, तो उसमें भी हमारी सपोर्ट करी, कई लोग यहाँ पर बैठे हुए जिन्होंने सपोर्ट भी किया है। एंड वी आर गेटिंग ग्रांट फंडिंग, बैंक फंडिंग, प्रोजेक्ट फंडिंग एंड सॉवरेन फंडिंग। दिस इज अ small piece of thing which I wanted to mention in the context of workplace. We are creating an extension of देवरिया। देवरिया को नया देवरिया बनाना ज्यादा आवश्यक है बनस्पत की मुंबई को शंघाई बनाना। अगर देवरिया को नया देवरिया बनाएंगे, आजमगढ़ को नया आजम बढ़ाएंगे, शिमोगा को नया शिमोगा बनाएंगे, तब जाके हमारे देश की असली व्यवस्था डिसेंट्रलाइज होगी। और कोविड ने दिखा दिया है कि हमारी जनता बहुत बड़े शहरों को ट्रस्ट नहीं करती है, वो मजबूरी से आती है। मैं नहीं कहता हूं कि बैंगलोर में और लोग नहीं आने चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं ट्रैफिक जैम यहां देखता हूं, अगर हम लोग जर्मैनिक मॉडल ऑफ अर्बनाइजेशन ले जाते, जर्मनी में बहुत बड़े शहर नहीं है, ये तो हम यूएस वाला मॉडल नाप तोल के आ गए। यहां पर यूएस में सब लोगों ने उनको हटा ही दिया, बड़े बड़े शिकागो में ले गए, न्यूयॉर्क में ले गए, इसमें ले गए। इफ यू गो टू उत्तर प्रदेश, देयर आर एटलीस्ट 10 cities which are not particularly big. It's a bit like Germany. You have Cologne, you have Düsseldorf, you have other things. The only big city is Berlin. So we have one big city which is Lucknow and one big city which is Kanpur. But otherwise there's Gorakhpur, there's Varanasi, there's Meerut. There is these cities which are tier 2 districts. So I would invite us to re-examine the way we are urbanizing. And here I have a specific request, and I know IndiCube is also a partner to this conference. How do we design workspaces here? And one of the things I'll just tell you, coincidentally this morning I had a call with somebody. मैं IT दिल्ली का छात्र रहा हूँ, एक IT दिल्ली के मेरे जूनियर हैं, उनसे आज सुबह मैं बात कर रहा था, वो कैलिफोर्निया में है। वो ये बोल रहे थे कि सर मुझे अगर 3-4 महीने की मोहलत मिले तो मैं तो यहाँ पर निरस बैठा हूँ, मुझे वहां पर आके काम करने में बहुत मजा आएगा। ही इज नाउ फाइनेंशियली वेरी सिक्योर, ही इज क्लोज टू $1 billion ऑफ नेटवर्थ। तो मैंने बोला मैं आपके लिए और आप जैसे आईटीएंस के लिए इसमें ही एक छोटा सा शहर बना दूंगा। You guys come there for a period of time. So I think attracting talent back is very, very important. And by the way, I can say this publicly, maybe we shouldn't be quoting this, but he got approached by a Chinese company 3 times because he's an AI expert, saying, can you please come and take citizenship of China? Knowing fully well that he's a green card holder, he's an Indian citizen. This is how aggressive our neighbor is in attracting talent. And we need to make sure that we create not just platforms to attract them, but also give them places like this, which actually get them here and keep them here. And I also believe that while Bangalore is a hotbed of attraction, there would also be some of these other areas that we need to get talent going to, because this is where 800 million people live. If we don't do this, we will not have an inclusive society. If we don't have an inclusive society, an extension of Brexit and an extension of what happened in the United States will happen. The middle will rebel. And in democracy, we can't do that. China can do it, we can't do it. So inclusion is very, very critical. And this is one reason I'm appealing many of you, which is my last point, to come and help me. I'm the only सांसद जो अभी लोकसभा में है, जो आईआईटी दिल्ली का है, कोर आईआईटीज में मैं ही हूं। एक और हैं रुड़की के, कांग्रेस में हैं, मैं ही एक हूं। मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया, तो आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इसमें आके मिलिए जुलिए। ये मेरा केंद्र है, मेरे गांव का है। इसमें आप लोग नेक्स्ट अपनी जो ऑफसाइट होती है, जाके गोवा में वाइन सिप करना सबके लिए बोरिंग हो गया। मैं भी कर रहा था, मैं भी सीनियर पार्टनर था एक कंसल्टिंग फर्म में। उसको छोड़िए, यहां पर आइए, experience the real India. We put you in touch with entrepreneurs there. Go out there and listen to it. There's a beautiful river called Narayani. Explore that. And I think then you will be in real touch with India. Get your children to go to these places. Your children are fed up of being with Nani and Dada in these big cities. Let them explore the real India. Of course, with my train journey also you can do that. But this is the challenge that I'm throwing at you, that come to my district. We've already got a number of people who are part of this initiative, which is we are calling Devariya Development Alliance.
And this is where we are working not just in this one district, but in the 10 districts. And this is where if you want to set up something which can look at UP and Bihar, then my district is open for business. We have created an ease of business office, which will also make sure that we don't get the usual hassles that some of the smaller districts throw at you. हम लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, सब चीज़ तो नहीं कर पाएंगे जैसे बड़े शहरों में होता है, लेकिन हमारा अभ्यास रहेगा, हमारी जान रहेगी. और ये मेरा बैनियन ट्री है, ये मेरे गांव में है, इसका नाम है बरगद के पार मेरा गांव है. उसमें आप सभी आमंत्रित हैं. मेरा ईमेल भी नोट कर लीजिए, shashank2@gmail.com. जिसको मुझे लिखना है, संपर्क करना है, आपको वहां पर विजिट करना है. डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, कम देयर, विजिट माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, विजिट माय एरिया एंड टेक पार्ट इन व्हाट आई थिंक इज अ वेरी नेसेसरी revolution for this country, which is building a great nation middle up. It's about time we focused on the real people, because if we do not have an inclusive growth formula, we will not succeed in creating Viksit Bharat, and this is the last opportunity. One shot at this. Some of you may have heard Eminem's song, there's one shot at this. Because in the next 15 to 20 years, what is happening today to China will happen to us. And coming generation, आने वाली पुश्तें हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, और अगर हम लोग बैठ गए और इसको नहीं लिया तो मेरे हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए. और मैं थोड़ा सा प्रोटेस्ट करना चाहूंगा कि एक पैनलिस्ट ने बोला कि सर वर्क करने से बहुत मुश्किल होती है, एआई से हम कम करें. ऐसा कुछ नहीं होता है. वर्क प्रोवाइड्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मीनिंग इन लाइफ. And I think this is also important. When you think about the future of work, we need to think about meaning in life. And meaning in life comes from productive work. And if you want to discover more about that, read my book, but also Nobel laureate who I know very well, called Edmund Phelps and Deen Dayal Upadhyay. Both of them have talked about the same thing in different contexts. Mass Flourishing of Edmund Phelps talks about how human flourishing is at the essence of a dynamic society. Dynamic society is not that which has huge technology. मैं भी technologist हूँ. टेक्नोलॉजी से इतना नहीं होता जितना कि हर व्यक्ति में क्षमता दी जाए कि मैं कुछ उठ के कर सकता हूं. जब वो उठ के करने वाला होता है, दैट इज द डायनेमिज्म दैट यू नीड इन एनी सोसाइटी, सो यू कैन क्रिएट अ ग्रेट नेशन. थैंक यू वेरी मच.